Hey guys, and welcome back to my channel and welcome to another NIFT related video. This video has been requested so many times on my Instagram, mainly because YouTube pe not a lot of you guys know about diploma and certificate courses. I keep talking about that on my Instagram more. सो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट्स आती हैं एंड मेनली बिकॉज आई इंटरेक्ट विद पीपल ऑन इंस्टाग्राम DMs, सो आई गॉट अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट्स फॉर दिस वीडियो बिकॉज you guys had so many questions regarding diploma and certificate courses at NIFT. ऑल्सो बिकॉज ये चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात नहीं की गई है ऑन लाइक ऑन यूट्यूब, ऑन गूगल एंड ऑन निफ्ट का वेबसाइट एंड स्टफ. इट्स लाइक वेरी unknown to a lot of people. So here I am talking about all of your doubts, clearing all of your doubts, and talking about everything that I know about these courses and sharing my knowledge and answering your questions under my knowledge. So if you're someone who's interested, then please keep on watching. So before I take up the first question, let me just give like a summary or gist of diploma and certificate courses at NIFT and what it is exactly. So basically, other than the BDES or BF Tech programs that NIFT has, that is bachelor degree wale programs, NIFT also has a few, not a few actually, a lot of diploma and certificate courses ke options. So basically, these certificate and diploma courses have different time periods. Some of them are for 6 months, some of them are for 1 year, and some for 2 years. 2 years wala basically is diploma. Diploma ke liye there is 1 year program also. Similarly, for certificate courses, there are 6-month programs and 1 year programs. So basically for diploma, you will have 2-year programs or a 1 year program, and for certificate course, you'll have a 6-month program or a 1 year program. एंड यू हैव अ वैरायटी ऑफ ऑप्शंस. बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट से हैं, बहुत डिफरेंट कैटेगरीज भी है जो निफ्ट में नहीं भी सिखाया जाता. लाइक फॉर बैचलर प्रोग्राम वो वाली चीज़ें भी है उसमें. सो यू कैन गो ऑन निफ्ट्स वेबसाइट. आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. वो PDF का अगर होगा तो सो दैट यू गाइज कैन गो एंड चेक दैट PDF आउट बिकॉज बहुत ह्यूज वैरायटी है, बहुत सारे कोर्सेज. आई कैन नॉट टॉक अबाउट ईच वन ऑफ देम. And it's like every NIFT center has different certificate diploma courses to offer, so I cannot really talk about every center because सबके अलग अलग क्राइटेरियाज है, अलग अलग कोर्सेज है. हर एक कोर्स हर सेंटर में भी रन नहीं करता. सो लाइक द डिप्लोमा कोर्स दैट आई एम डूइंग एट निफ्ट, द फैशन फिट एंड स्टाइल, ये सिर्फ चेन्नई में है एंड इट्स इन मुंबई. सो या इट्स रनिंग ओनली इन दीज टू कैंपसेस. सिमिलरली बाकी भी सारे कोर्सेज सब अलग अलग कैंपस में अलग अलग कोर्सेज हैं. सो यू विल हैव टू चेक दैट आउट फॉर योर सेल्फ, विच कोर्स सूट्स you and which course is available on which campus. So do that. Go check out the link in the description box below. And now we'll move on to our first question. So the first question is, I wanted to know if for diploma there's any interview. Do they provide scholarships? So yes, there is an interview for diploma courses. Like I don't know for all diploma courses if they have this criteria or not, but for the one that I am doing, they had like an interview round. You apply, you register for the course, you get a call from them. It might be offline, it can be online, anything, or on a call. And then they'll take your interview, and if you get selected, then you get a mail on your registered mail ID that you're selected, and then you'll get the fee structure and the admission process moves on. So yeah, the only thing that you'll have to do to apply for a diploma course is to give an interview and clear that. And do they provide scholarships? No, they don't. For diploma and certificate courses they don't, because already बहुत कम seats होते हैं in these programs. Like there are very less number of students who apply for these programs, so there are no scholarships as of now. और मैं जो डिप्लोमा कोर्स और सर्टिफिकेट कोर्सेज के बारे में जानती हूँ उनमें तो नहीं है. बट इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर सम अनदर सेंटर एंड वहाँ पे कोई डिप्लोमा कोर्स वाले कोऑर्डिनेटर से इफ़ यू आर टॉकिंग, यू कैन तो आस्क देम इफ़ दे हैव स्कॉलरशिप्स. बट मुंबई वाले कैंपस में देर आर नन, क्योंकि यहाँ पे वाले जो कोर्सेज हैं उसमें स्कॉलरशिप्स दे डोंट प्रोवाइड एज ऑफ नाउ at least. How we know how many seats are available for lateral entry? So before I answer this question, let me just clear a concept here. So basically, after you're done with, if you're doing your a 2-year diploma from NIFT, then you have an option for lateral entry. So lateral entry is basically you get admission directly into the second year of bachelor's degree. So after you do 2 years of your diploma, you don't have to do your first year of bachelor program, that is foundation year. You directly get admission into the second year of the bachelor program, whichever specialization you choose. Like if
फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेकिंग अप FD, देन डायरेक्टली FD के थर्ड सेमेस्टर में आपको एडमिशन मिल जाएगा. So firstly, how you apply for lateral entry is, after you get done with your 2 years of diploma, you sit for an entrance examination. It's similar to the one that you give like normal bachelor's program के लिए, but it's not the same. It is similar but it's not the same, different होता है. And the number of people who are attempting for lateral entry that time, उनके बीच में से आपका ऑल इंडिया रैंक आएगा आफ्टर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन. एंड देन आफ्टर योर ऑल इंडिया रैंक हैज़ बीन अनाउंस्ड, यू गेट लाइक अ PDF. उसमें लिखा होता है कि कौन से सेंटर में कौन से डिपार्टमेंट में कितने सीट्स अवेलेबल है. देन अकॉर्डिंग टू योर रैंक यू कैन चूज एंड टेल देम व्हेन द एडमिशन प्रोसेस इज गोइंग ऑन. काउंसलिंग राउंड के वक्त यू कैन टेल देम आई वांट दिस सेंटर, दिस डिपार्टमेंट. एंड देन जो भी आपने डिपार्टमेंट चूज़ किया हो उसके सेकेंड ईयर में आपको डायरेक्टली एडमिशन मिल जाएगा. सो यू वोंट हैव फर्स्ट ईयर, यू विल डू 2 years of your diploma, no foundation program, and direct admission into the second year of your bachelor program. That is how lateral entry का system works. And I guess I've answered your question बीच में कि how many seats, how we know how many seats are available for lateral entry. PDF आता है, उसमें they mention कौन से डिपार्टमेंट में, कौन से सेंटर में, कौन से डिपार्टमेंट में कितने सीट्स अवेलेबल है. सॉरी माई हेयर वर नॉट बिहेविंग एंड इट्स लाइक वेरी ऑयली, तो मैंने बाल हेयर स्टाइल चेंज कर दिया middle of the video, please ignore that. So moving on to our next question, which is what all things do we need to learn so that it can be easy for us during our diploma journey? Nothing actually, you don't have to learn anything because you're joining diploma to learn from there. Then why do you have to learn beforehand? Like if you're going there to learn, वहाँ पे जाके आप सब सीखोगे. They teach you from the very basic, मशीन का स्पीड कैसे मेंटेन करना है, पेपर पे कैसे चलती है, देन हाउ डू यू थ्रेड, डू द थ्रेडिंग ऑन द मशीन, एवरीथिंग दे टीच यू. पैटर्न मेकिंग दे टीच यू फ्रॉम द बेसिक्स. about the fabrics they teach you from the basics, the draping may they teach you from the basics, illustrations, everything they teach you like you're a newbie. And yeah, they teach you from the very 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 basic. जैसे bachelor students को वो एकदम level 1 से सिखाते हैं, they teach you from level 1. So there's nothing that you need to learn पहले से ही. If you do know already, that's good. If you don't, you don't have to worry, you learn everything there. वो आपको अच्छे से एकदम prepare करेंगे and make you a good designer there. Is there any entrance exam for these courses, diploma and certificate? No, there is no entrance examination, but for some diploma courses there is an interview round. I guess for every diploma course they have an interview round. I'm guessing so because मैंने जो मेरे friends से बात की है, we're doing like 1-year diploma programs, and the one that I'm doing is a 2-year diploma program. Both of these programs have, so sorry about that noise, both of these programs have like an interview round. So basically I guess an interview is the only thing that you need to give for to get admission into these courses. There are no entrance examinations whatsoever. Can we do certificate course even if we're not a student of NIFT? Obviously you are opting to do a certificate course at NIFT to become a NIFTian, right? To get a certificate from NIFT. So you don't already have to be a NIFTian. If you are already a NIFTian, then why would you need a certificate course in the first place? Because पूरा बैचलर प्रोग्राम में 4 years में आपको सब सिखा देंगे. Why would you need another 6 months course at NIFT? So yeah, if you're not a student of NIFT, you can take up a certificate or a diploma course and become a NIFTian that way. Do we get internships and placements after diploma and certificate courses? No. I mean campus placements नहीं होती है. Campus के through और ये निफ्ट के थ्रू आपको कोई भी प्लेसमेंट का गारंटी या फिर इंटर्नशिप का गारंटी नहीं मिलता है. बट येस, इंडस्ट्री में यू हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. इंडस्ट्री में दे डू वैल्यू दीज कोर्सेज टू, लाइक डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज. एंड येस, इफ़ यू अप्लाई ऑन योर ओन यू विल गेट इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स. बट कैंपस के थ्रू इट्स नॉट प्रॉमिस दैट कैंपस प्लेसमेंट होगा, कैंपस के थ्रू आपको अप्लाई करने मिलेगा, वो सब नहीं होता. बट ऑन योर ओन यू कैन अप्लाई एंड यू गेट a job or an internship after doing diploma and certificate courses too. He wanted to know if there's any specialization courses for Illustrator or something related to FD software. There might be, I'm not sure, but as I told you guys in the beginning of this video, NIFT has a lot of certificate courses, so you can go check their website and see what all courses they have. बहुत सारे हैं, 6 months, 1 year, 2 year, बहुत सारे हैं. Some of them are for 8 months also, so you can go check it out if you
have a course related to illustration or whichever software you're talking about. UI UX design related भी कुछ कुछ courses है, तो maybe I guess Illustrator and or digital art के लिए भी होंगे. So you can go check that PDF out. The link will be in the description box below. If PDF का link description box में नहीं हुआ तो आपको कहाँ पे जाके वो CE programs के लिए search करना है, वो वाला link मैं नीचे डाल दूँगी, तो you can go check that out. When is new semester going to start? I have no idea, but I guess अभी new semester January में start हुआ है, like the second batch of diploma, like my junior batch. तो वो अभी जनवरी में स्टार्ट हुआ, तो आई एम गेसिंग अगेन द एडमिशन प्रोसेस विल स्टार्ट इन सितंबर एंड द न्यू बैच विल स्टार्ट इन जनवरी, बट आई एम नॉट श्योर बिकॉज मे बी दिस कोर्स एवरी 6 months वो न्यू बैच लेते हैं, बट आई एम नॉट श्योर बिकॉज पास्ट में. सो दिस कोर्स दिस टाइम डिप्लोमा स्टार्टेड लाइक आफ्टर 3 years, कोविड के बाद अभी चालू हुआ है. तो माई बैच इज़ लाइक द फर्स्ट बैच, एंड पहले जब था तो इट वॉज लाइक ईयरली बेसिस पे ही एडमिशन्स लेते थे, बट दिस टाइम आफ्टर माई बैच 6 months में ही हो गया था रिन्यू. सो आई एम नॉट श्योर 6 months में होगा या 1 year में, बट वेन एवर दे डू दे विल पोस्ट ऑन देयर इंस्टाग्राम ID एंड इंस्टाग्राम के वेबसाइट पे भी, सॉरी गूगल पे वेबसाइट पे भी आ जाएगा. सो यू कैन कीप चेकिंग दैट. यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम. मैं सब अपडेट्स उस पर डालते रहती हूँ, सब शेयर करते रहती हूँ. सो इफ़ यू वांट टू स्टे अपडेटेड यू कैन गो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम एज वेल. Please let me know if doing diploma can be a good backup plan if not bachelor's. Yes, I am doing the same thing. Like bachelor's में मेरा admission नहीं हुआ था, so I took up diploma. I'm doing diploma. Ma'am suggested me to take up lateral entry, but the thing is, she also suggested that if you're doing bachelor's, I mean if you're doing diploma, then lateral entry जब आप bachelor's में लो तो don't take up the same department. So like I'm doing diploma in fashion design. So she suggested after you take lateral entry, do not choose fashion design. Take up TD, KD, and stuff like FC, stuff like that. Because अब डिप्लोमा मतलब मैं डिप्लोमा में सब कुछ जो मैं बैचलर प्रोग्राम में सीखूंगी वो सब कुछ आई वुड हैव ऑलरेडी लर्नड इन डिप्लोमा. सिर्फ थोड़ी चीज़ें नहीं होंगी, लाइक द कैंपस प्लेसमेंट, द इंटर्नशिप and the foundation program. So rest everything I would have learned already in my diploma. So she was like कि 3 years आप वापस से सेम चीज़ सीखोगे, तो don't do that. So basically आप लोग जो भी बैचलर्स में सीखोगे वही आप डिप्लोमा में भी सीखते हो. बैचलर्स में आप वो 3 साल में सीखते हो एंड डिप्लोमा में आप वो 2 साल में सीखते हो. Bachelor's के लिए I'm saying 3 years because the first year is foundation year and foundation year is nothing related to your specialization, it's just generalized. So the rest 3 years that you do in bachelor's is your specialization, and वही जो specialization में आपने 3 years में सीखा है हम लोग वो 2 years में सीखते हैं. So yeah, doing diploma can be a good backup for bachelor's, but I am saying सिर्फ diploma मत करना. इफ़ यू डूइंग डिप्लोमा डू अ बैचलर्स डिग्री साइड बाय साइड, ये डिस्टेंस लर्निंग से कर लो. बिकॉज इफ़ इन फ्यूचर यू प्लान टू डू मास्टर्स और एनी थिंग ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ गो टू अब्रॉड एंड स्टडी एंड स्टफ लाइक दैट, यू नीड अ बैचलर्स डिग्री. सो बस उसके लिए नाम के लिए बैचलर्स डिग्री के लिए BDES होना ज़रूरी नहीं है, कोई भी बैचलर्स डिग्री चलेगी. इसलिए यू कैन ऑप्ट फॉर दिस डिस्टेंस लर्निंग एंड डू टेक अप एनी बैचलर्स डिग्री साइड बाय साइड. सो आई एम डूइंग अ डिप्लोमा इन FD, but at the same time I'm taking a bachelor's in business administration through distance learning. So yeah, since I plan to go abroad in future, so yeah. I also wanted to know if we could take up BDES after 2 years diploma. Is it worth it? So as I talked about it earlier, like अभी just मैं जो बता रही थी, if you're doing a diploma in FD या KD या whatever, after you take up lateral entry, don't take up the same department, अलग department लेना. So basically if you're doing diploma in FD right now and if you want to take up FC in bachelor's, then it's totally worth it. But if you're going to do diploma in FD and you're going to opt for FD again in bachelor programs, then it's not worth it because you will be wasting your 3 years learning the same thing that you've learned already just for that placement wala thing and then internship wala period. So I don't think wasting 3 years for those two things is like worth it. But like a few of my friends are interested in FC styling and stuff like that. So after doing their diploma in FD, they're going to opt for FC in the bachelor's program. So that is totally worth it. That will be like you will learn FD and you'll also learn about FC. You'll have knowledge about 2 streams and that is of course जितनी ज़्यादा knowledge हो उतना ज़्यादा अच्छा होता है. तो that will be worth it because आप वो 3 साल नया सीखोगे, जो आपने पहले सीखा है वही सेम नहीं सीखने वाले.
One more question. For the ones taking diploma, are hostels provided? Yes, but आपको second priority होती है. First priority is given to bachelor students, and if अगर उनके hostel rooms उनको allot हो जाने के बाद hostel rooms, if there are vacancies, then they give hostel rooms to diploma students too. A lot of my juniors are staying in hostel right now because there were vacancies, but नाउ दैट न्यू बैच विल कम अप इन अगस्त, तो अगस्त के बाद जब ये सब हॉस्टल रूम्स फिल हो जाएंगे उसके बाद जितनी वैकेंसी होगी उस पर डिपेंड करेगा इफ़ दे गेट अ हॉस्टल रूम और नॉट. सो फर्स्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू बैचलर स्टूडेंट्स एंड देन टू डिप्लोमा स्टूडेंट्स, बट अगर वैकेंसी है तो देन दे डू गिव you the hostel rooms. And yeah, that was our last question. I hope this video was informative and helped you guys in one way at least and clear your doubts. अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन है, आप बिना डरे बिना कुछ सोचे नीचे कमेंट्स में मेरे को पूछ सकते हो, or you can DM me on my Instagram. My Instagram handle is there in the description box below. You can go follow me there. If follow नहीं करना मत करो, but question पूछना आप पूछ सकते हो. I'll answer that for sure. I'll help you guys out. And I hope this video helped you guys too. It was informative, it was nice, and it was informative and helpful. If it was, then do not forget to give this video a big thumbs up. Like karne se it helps the creator grow and reach more people, and if this video reaches a lot more people, they'll also get enlightened about diploma and certificate courses, and it might help them too. So don't forget to share this video, like this video, and comment down below if you have any questions, and subscribe to my channel for a lot of NIFT content. I already have so much of NIFT content on my channel. अगर आपने नहीं देखा तो वो भी जाके देख लेना. New video will come out really soon, and yeah, I'll see you really very soon in my next video. I really hope this video helped you guys. If it did, then do not forget to give this video a big thumbs up. Bye. Take care.